इससे पहले कि हम ये लाइव स्ट्रीम शुरू करें, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल दोज हु सेलिब्रेट एंड ऑल दोज हु डू नॉट। हॉलीडे सीजन, इसके बाद न्यू ईयर्स, तो मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को दुआएं दूंगा मैं, बेस्ट विशेस कि आपका अगला साल जो है सफल रहे, सक्सेसफुल रहे, प्रॉस्पेरस रहे, हेल्थी रहे, बस सारी गुड वाइब्स आप सभी को जिन्होंने पिछले साल में मेरा साथ दिया इस चैनल पर, हर वीडियो पे, हर कमेंट पर, हर पोस्ट पर, जो भी आप लोग जुड़े हैं, जिन्होंने भी कमेंट किया, लाइक किया, इस चैनल को बढ़ाया, मेरी तरफ से थैंक यू एंड एवरीवन हियर विशिंग यू वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2023। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट, मीरपुर, ढाका। कुछ ही पल पहले, 20-25 मिनट पहले एक बढ़िया मैच खत्म हुआ। आप सबको मैच कैसा लगा प्लीज बता दीजिए कमेंट करके, लाइक करके। कमेंट्स आप यहाँ पे डालिए। रिमेंबर, आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि आप अगर इस स्ट्रीम पे जुड़े हो तो लाइक बटन ठोकिए, स्मैश दैट लाइक बटन, क्योंकि यूट्यूब का जो ये एल्गोरिथम है वो लाइक काउंट पर, लाइक के बेसिस पे वीडियो को प्रमोट करता है, वीडियो की रीच बढ़ाता है। तो प्लीज इफ यू आर वाचिंग, लाइक, लेट्स गेट द लाइक्स अप। यस, आई सी लाइक्स कमिंग अप। आई वांट ऑल ऑफ यू, चाहे आप यहाँ पे एक पल के लिए भी आए हो, चाहे आप गुजरते हुए यहाँ से निकले, अगर आप स्ट्रीम पे बैठे हो आपसे लेकर अंत तक या जब तक, इफ यू आर हियर प्लीज smash that like button so the reach of this video and of course this channel increases by YouTube's algorithm. Who am I? Who are you? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम तो आप जानते हैं, जिमी भाई, जिमी सर आपने कहा, बहुत बहुत प्यार आपका। आपको भी दोस्त, whoever you are, who am I? Merry Christmas. Thank you for joining here. Let's get down to the match. आपको याद दिला दूं कि पहला मैच इंडिया won rather comfortably to take a 1-0 series lead. Now, remind you दोस्तों, WTC World Test चैंपियनशिप साइकिल, आशुतोष बाजपेयी एक रेगुलर व्यूअर है, वो कह रहे हैं व्हाट नीड्स टू बी द मार्जिन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आई वाज गोना टॉक अबाउट इट। आपने पूछा आशुतोष भाई, इंडिया के पास इस मैच के बाद 4 टेस्ट मैचेस बचते हैं। इस सीरीज के शुरुआत में मैंने आप सभी को याद दिलाया कि जो 6 टेस्ट मैच बचते हैं इस 2022-23 साइकिल में, दैट इज 2 अगेंस्ट बांग्लादेश and 4 against Australia. India ideally should win all 4, not draw. And if they lose, they can only afford to lose one of these 6 test matches. Now, किसने सोचा होगा कि 140 रन के टारगेट में इंडिया हाँपते हाँपते, मरते मरते, बचते बचते हार से ये टेस्ट मैच इस फॉर्मेट में जीत जाएगी। बहुत बहुत बड़ी बात है। They've averted disaster because had they lost this match to Bangladesh at Mirpur, it would have meant that India would have to beat Australia 4-0. So, coming back to your question, India should ideally target beating Australia 4-0 when that series starts in February. But अगर 3-1 मार्जिन से भी वो सीरीज जीतती है, यानी कि रोहित की टीम, फिर भी चांसेस बरकरार हैं WTC साइकिल पहुंचने में। बट वेरी वेरी टफ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्म है दोस्तों, द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम हैज, कीप इन माइंड दोस्तों, द लास्ट टाइम दे केम टू एशिया, यू नो, दे on those flat tracks in Pakistan, they beat Pakistan 1-0. उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका को जो धोया 2 दिन के अंदर होबार्ट टेस्ट मैच में, और उससे पहले जिस तरह से पिछाड़ा वेस्ट इंडीज को घर पे, they're looking like a form team. Thank you for all the comments here. There was another comment coming in. Someone said, "Miss you on Tinku Jia." जी हाँ, मैंने बताया था अपने दूसरे चैनल पर कि क्यों मैं 3 हफ्ते से फेक इट इंडिया चैनल पे नहीं था। I was traveling, I was shooting. Vikas saying, "Thank you, Merry Christmas." I think it was you, Vikas, who said, "Miss you on Tinku Jia." Well, I hope you watched Friday's episode. It was about Messi and Argentina. We did a bit of poking and needling of Akshay Kumar and his biopic trend. So I hope you caught me on Friday's episode. I'm very much back at Fake It India. हो सके इस अगले हफ्ते एपिसोड ना करें, क्योंकि जस्ट लाइक दिवाली दोस्तों, न्यू ईयर, क्रिसमस का टाइम है, तो मुझे लगता है कि टीम के 2-3 जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो शायद इस हफ्ते नहीं आएंगे। बट नीरज एंड आई विल ट्राई टू गेट यू another episode this week. If not, we'll put out a best highlights of 2022 Fake It India video just for you. But बहुत हो गए बातें फेक इट इंडिया को लेकर। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम जो दोस्तों 3 विकेट से जीते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। यू ऑलवेज न्यू के Bangladesh will come hard at you because we know the Mirpur track, spin works there. They have a lot of good spinners here. I mean, going back to the time they first played their test match, Mohammad Rafiq, all those spinners. Thank you, Vikas, for your comments once again.
तो दोस्तों मुश्किल तो होने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा कल शाम को रिवाइंड करना चाहूँगा। 140 रन टारगेट, अनदर फेलियर फॉर के एल राहुल। आई डोंट नो हाउ मच टाइम के एल राहुल हैज़ लेफ्ट इन दिस टेस्ट टीम, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में। शुभमन गिल विल बी डिसअपॉइंटेड इन द वे दैट ही गॉट आउट। इसी चैनल पर मैंने कहा था जब उन्होंने 100 लगाया था पिछले टेस्ट मैच में कि दिस शुड प्रूव अ टर्निंग पॉइंट फॉर शुभमन गिल, बट शुभमन गिल डिड नॉट। राहुल की जगह धवन, अरे कहाँ आप 38-year-old धवन को ला रहे हो भाई? धवन से तो इंडियन टीम 4 साल आगे मूव हो गई, और धवन खुद नहीं चाहते हैं कि वो टेस्ट मैच खेलें। यू नाउ नीड यंगर प्लेयर्स। सो रोहित शर्मा कम्स बैक एंड कैप्टन्स इंडिया इनटू द न्यू ईयर until hopefully India wins that WTC। लेकिन रोहित शर्मा के आगे विकास सिंह, बिल्कुल आपका नाम तो मैं ले चुका हूं 3-4 बार। आप ही ने फेक इन इंडिया के बारे में पूछा था, आपने कहा था वी मिस यू, आपने कहा था मेरी क्रिसमस, मैंने भी जवाब दिया। तो बिल्कुल विकास सिंह, आप जब तक कमेंट डालते रहेंगे मैं आपको एक्नॉलेज करता रहूंगा। लेकिन शिखर धवन टेस्ट मैच में, अरे भैया कहाँ कहाँ। दीपक कुमार कह रहे हैं ये राहुल को कैप्टन से हटाओ। बिल्कुल राहुल, देखिए राहुल को शॉर्ट टर्म नोटिस पे वाइस कैप्टन बनाया गया था, and then he was made captain when Rohit Sharma was injured. He's not a captain. I mean, if you've seen my streams, ये बंदे ने कभी फर्स्ट क्लास लेवल पे कर्नाटका को कभी लीड नहीं किया था। केवल ये आईपीएल के कप्तान है, और कहाँ आईपीएल की कप्तानी, और कहाँ फिर इंडियन टेस्ट टीम। अमय द गूनर सेइंग मेरी क्रिसमस, थैंक यू अमय, सेम टू यू, मेरी क्रिसमस, होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो हाँ देखिए, केएल राहुल का ये बहुत ही खराब सीरीज रहा ना, उनसे रन बने, कैप्टनसी वाज डिसेंट, but again there's not too much to do when you have a set team. Like I was saying, Shubman Gill would be very very disappointed. Pujara again, Pujara Gill getting so set in, and then both getting stumped by Nurul Hassan. Dismissals that really left India in a bad spot. Once again, Bichare Rishabh Pant, he walked out. The top order had collapsed, 4 wickets down. He could obviously not carry on. अक्षर पटेल दोस्तों ये नाइट वॉचमैन के तौर पे नहीं आए। दीपक कुमार कह रहे हैं मेरी क्रिसमस, आपको भी दीपक, थैंक यू। अक्षर पटेल डिड नॉट कम इन as a night watchman. He did not come in as night hawk as Brendan McCullum and Ben Stokes and Stuart Broad tried. He came in because the ball was turning. और ये शर्मिंदगी की बात है कि विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर, अ प्लेयर हु आई एम अ बिग फैन ऑफ, दिस इज विराट कोहली, नंबर 1 बैट्समैन रह चुके बहुत साल तक, वो क्या स्पिन खेलने के लायक नहीं है? वो क्या काबिल नहीं है? आप क्या डर गए बांग्लादेश के स्पिनर्स से कि आपने अक्षर पटेल को भेजा ये कहने के लिए कि नहीं वो लेफ्ट आर्मर है? नो, दिस वाज नॉट टैक्टिकल, दिस वाज विराट कोहली वेरी वेरी अफ्रेड टू गो आउट and play a turning ball, because we know how bad he is against left arm spin and how poor Virat Kohli has been against spin. If you wanted to send a left armer, you have no better left armer. Rishabh Pant is India's best test batsman going around right now. पुजारा एक तरफ, गिल एक तरफ, कोहली एक तरफ, अय्यर एक तरफ, ऋषभ पंत इस टीम के सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, मैच विनर हैं। आपने इनको छुपाया। राहुल द्रविड़ सर, आपको बहुत बहुत सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपकी टीम ऑलमोस्ट शर्मिंदा होके इस मैच में हार रही थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस राहुल द्रविड़ द कोच, ही वाज माय फेवरेट प्लेयर ग्रोइंग अप, बट राहुल द्रविड़ द कोच जो निर्णय ले रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, ये मेरे तो समझ से बाहर है, इस नाचीज के बाहर है। I was shocked to see Akshar Patel walk out at the fall of the 3rd wicket. चलिए उन्होंने अपना काम किया, he got a good 34-35. He was bowled by a ball that sharply came in. But आप क्या इंडियन क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट जगत को आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं जब आप विराट कोहली के आगे, श्रेयस अय्यर के आगे, ऋषभ पंत के आगे आप अक्षर पटेल को भेज रहे हो? वेरी वेरी शॉकिंग थिंग। Virat Kohli should have walked out. He was your best batsman. He was the best batsman in the world for a long time. Why he was coming out? And I was also very, very surprised to see that his reaction after getting out. You knew that Virat Kohli on that kind of track was going to struggle. इनके पास form तो बिल्कुल नहीं है, खासकर टेस्ट मैच में. So I think that was a very, very defensive, a very knee-jerk, and maybe even a little bit of a frightened reaction. But as it turned out, after the wickets fell, you had Jaydev Unadkat come out as the proper night watchman. वो नहीं चले। ऋषभ पंत चले, वो बहुत बार चलते हैं, वो आज आउट हो गए, and Akshar got out. India were looking at, they were 7 down, staring at a target, was still around 70-80 runs at that time. But 2 batsmen who play spin very very well. Shreyas Iyer, who's the future, I think he'll be a future captain, as well as Ravichandran Ashwin. The way they played to take India out of a hole
fantastic. Hats off. And because of them, we've escaped a narrow defeat. And Indian cricket has said Merry Christmas to all its fans. मैं देख रहा था कि बहुत बहुत सालों बाद मैंने देखा कि क्रिसमस के दिन इंडिया एक मैच खेल रही है किसी भी फॉर्मेट में। और मुझे याद है कि 25 साल पहले 1997 क्रिसमस 97, उस समय मैं मसूरी में था, हम वहाँ पर रहते थे। आई रिमेंबर माई फादर एंड आई, आफ्टर द प्रेजेंट्स वर ओपन, आफ्टर द केक वाज हैड एंड ऑल द फेस्टिविटीज वर डन, मैं और मेरे पिताजी हमने दूसरे घर पे आए, हम दोनों मैच देखने। बिकॉज इट वाज अ रेयर डे, इट वाज दिसंबर 25 1997। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक श्रृंखला चल रहा था एंड इट वाज अ मैच प्लेड ऑन क्रिसमस डे एंड आई रिमेंबर श्रीलंका वर बैटिंग फर्स्ट और मैं बड़ा खुश था कि यार क्रिसमस के दिन मैच देखने को मिल रहा है, वो भी वन डे, बिकॉज बैक देन वन डेज वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट। और जवाहरलाल श्रीनाथ ने उस समय दोस्तों 1997 वर्ल्ड कप विजेता टीम श्रीलंका के डेंजरस खिलाड़ी रोमेश कल्लू उतारना, लिटिल कल्लू एज टोनी ग्रेग यूज्ड टू कॉल हिम, श्रीनाथ ने उन्हें बोल्ड किया था डक पे, शायद तीसरी या चौथी गेंद पे। और मैं बड़ा खुश था कि भाई द डेंजरस जोड़ी ऑफ जयसूर्या एंड कलुवधारना हैज बीन सेपरेटेड। लेकिन उसके बाद दोस्तों उस पिच पर जो, आई फॉरगॉट व्हाट द वेन्यू वाज, मुझे याद नहीं है, बट जो ऊपर नीचे, एंड इट वाज डीम्ड टू बी अ वेरी डेंजरस पिच। और मुझे याद है अर्जुना राणा टूंगा आए, सचिन आए, अजहर आए, अंपायर्स आए, मैच रेफरी, और विजुअल सिटिंग देयर वाचिंग डीडी ऑन अ वेरी स्मॉल कलर टीवी। डीडी में क्रिसमस के दिन वो देखना कि यार अरे ये क्या हो रहा है, इतने अंपायर्स और ये लोग बात क्यों कर रहे हैं। एंड देन दैट मैच वाज कॉल्ड ऑफ, आई थिंक विद इन 3-4 ओवर्स। द पिच वाज डीम्ड अनफिट एंड अनसेफ फॉर प्ले। बट दैट दोस्तों वाज द लास्ट टाइम, ये और ये मैंने स्टैट्स देखे 25 साल के बाद आज दोस्तों क्रिसमस डे पर इंडियन टीम ने एक मैच खेला। अक्सर हम जानते हैं कि बॉक्सिंग डे यानी कि December 26 is the iconic test match venue for so many countries. India has played many boxing day test matches, South Africa, New Zealand, Australia largely, but this was after 25 years. It was the first time that any Indian cricket team was playing on December 25th यानी कि क्रिसमस डे। खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, हम सभी अपने अपने जगहों पे, आई मीन यू डोंट हैव टू बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस बट इट्स अ हॉलिडे, इट्स अ संडे। उस दिन एटलीस्ट आई रिमेंबर while Christmas was fun, it was rather sad that back in 1997 यानी कि 25 साल पहले that match was called off. But today Indian cricket, at least Iyer and Ashwin खासकर, I have to mention them again, they've given all of us a reason to smile as well on Christmas from a sporting perspective. But बहुत सवाल आ रहे हैं आप लोगों में से कि यार केएल पुजारा रिटायर फ्रॉम टेस्ट एंड कोहली प्लीज यू ऑल्सो नीरज जा कह रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि आपको ऐसे क्यों लग रहा होगा। I'm going to read the comments here on the laptop. It's slightly easier to read it here than on the phone. Give me 5 seconds. मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ। ओह बहुत सारे कमेंट्स आए। आशुतोष बाजपेयी कह रहे अश्विन फॉर कैप्टन, अय्यर इज नेक्स्ट कैप्टन। देखिए अश्विन को अगर अब तक कप्तानी नहीं दी गई तो आई डोंट सी इट हैपनिंग। ही इज हेडिंग इनटू दैट ट्वाइलाइट फेज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट करियर्स। आई डोंट थिंक ही विल गेट अ चांस, बट या हु नोस। डुमरू, क्या नाम है डुमरू, आपका असल नाम क्या है? डुमरू कह रहे हैं इफ रहाने परफॉर्म्स एंड गेट्स बैक टू फॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुड यू इंक्लूड हिम इन द टीम और कंटिन्यू विद अय्यर? Nothing against Rahane, he can score a lot of runs, he got a double hundred, but Iyer is batting so well across formats. Iyer's place cannot go anywhere. Every single match almost, he's bailing India out in these tough conditions. Iyer is here for a long time. I think Pujara's probably done enough. I think regards to Dumuru, whatever your name is, regards to Rahane, he can score a lot of runs, but who do you replace? Again, Kohli's not in form, but this team is not going to replace anyone. If anyone does get replaced, is going to be KL Rahul, but again, he's an opener. Rahane se is umar mein, is stage of his career, they're not going to get him to open. So I just feel bad. Rahane can score a lot of runs, but I just don't see him able to take anyone's place in this current 11. That's my son behind making noise. दीपक कुमार कह रहे हैं क्या ऋषभ पंत ओपनिंग कर सकता है? बिल्कुल काबिल तो है, but टेस्ट मैच में I think India is not going to take that much of a left field selection. I think they're going to stick to Rohit Sharma and probably KL Rahul, which would be unfair on Gill. I just don't, given the kind of faith that this team management has put dosto in KL Rahul for so long, I don't think it's going to happen. So yes, by all means Rishabh Pant can open, but there's no need because he's already India's all-time greatest test keeper batsman. He's doing a very fine job in the middle order. Keep him there. Find someone. Back Gill. I think Gill has got a lot of years in him. So back him instead.
Time to sack Rahul, saying CJ. Yeah, well, hey. Ashutosh Bajpai, Messi at 35 winning golden ball. Meanwhile, Rohit be like, 2 match खेल लिया, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे. देखिए, मजाक के अलावा there is a bit of seriousness in what Ashutosh is saying. Rohit is 35. He's always been injury prone. He rarely plays 3 series in a row. He's India's most important player because he's a captain across all 3 formats, and he's in that very, very crucial, very, very hefty role of an opener. And to see him miss another series, yes, clearly India has to look beyond Rohit Sharma, the captain, the opener, at the end of this year. I think in T20, it's a very obvious choice who will be the next captain, Hardik Pandya. बस देखना ये है कि किस सीरीज के बाद, किस सीरीज से पहले the BCCI officially hands over the T20 captaincy to Rohit Sharma. In regards to the one-day format, there's no doubt that he will lead India into the 2023 One-Day World Cup, which starts in about 10 months. उसके बाद क्या होता है देखना पड़ेगा, शायद वो खुद ही रिटायर करेंगे. And in regards to Test match cricket, I think Rohit will again lead India for the remainder of this WTC cycle. But then again, change is inevitable because whenever Rohit Sharma's time comes up, you all knew that he was only going to be a stopgap captain for the Indian team across formats. Ahmed the Gooner saying, if I remember correctly, that Christmas match was an ODI that was called off. Bilkul, you're right. That's what I was just talking about. I gave a full-blown description in that. You are absolutely right. Mukesh, but Rahul and Virat should play domestic matches to get form. You got a very, very good point, Mukesh. A lot of people, not just here, but across platforms, across channels, and even in the newspapers, have said that these players need to play domestic cricket. But it's so rare that our players, because of the schedule, I get it, their schedule and so many factors, they do not come back to play domestic cricket, which I think is sad for domestic cricket. It's also sad for the domestic players who could really learn a lot from spending a week or two, with these players. I was glad that Suryakumar Yadav went and played that one round of Ranji cricket because the young Mumbai players having Rahane, having Shreyas Iyer in the Ranji squad, sharing a dressing room with them. There's a lot that young uncapped Indian players can learn. So yeah. सुभाष भिष्ट कह रहे हैं मेरी कृष्ण ब्रदर थैंक यू सुभाष टू यू इंडिया गॉट अ विन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल वन माय फेवरेट शाहरुख खान मूवीज बाजीगर आज तो भाई बचते मतलब हारते हारते बच गए बाल बाल बच गए जैसे एंड फुल क्रेडिट टू अश्विन एंड श्रेयस अय्यर टू प्ले ऑन दैट टर्निंग ट्रैक अगेंस्ट शाकिब उल हसन मेहदी हसन ताइजुल इस्लाम 3 probing accurate aggressive left arm spinners and I'm glad that 16 run over came against Mehdi Hassan, who's really tormented India. Ashwin and Iyer said, "Bahut ho gaya, we need to score runs." Hats off to Iyer, hats off to Ashwin for taking India to a very tense 3-wicket win, which I must remind you has given India the series 2-0, which puts the focus back on that WTC cycle, दोस्तों. 4 टेस्ट मैच बचते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फरवरी में शुरू होने को जाएंगे. India cannot afford to lose more than one of those. So let's hope that it's 4-0 India, or at the worst 3-1 to India. और कौन से कमेंट है यहाँ पे let's just refresh this my laptop is getting stuck here. तो हाँ बिल्कुल अगर आपके पास कुछ व्यूज हाँ आपको कुछ कहना है इंडियन टीम के बारे में तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इस कमेंट में. I'll do my best to answer all your questions. If I miss some of them माफी चाहूँगा. पर बिफोर आई कंटिन्यू दोस्तों मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा प्लीज़ अगर आप इस स्ट्रीम पे जुड़े हैं केवल 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे भी हो या पूरे 20-30 मिनट तक प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन. लेट्स गेट दोज लाइक्स अप बिकॉज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इट लाइक्स टू सी हाउ मेनी लाइक्स हैव बीन हिट. द मोर लाइक्स the better the chance of this video to reach more people. So please while you're here hit that like button. I need all of you दोस्तों आप में से प्यारे प्यारे लोग जो जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीम पर प्लीज आप लाइव बटन ठोकिए. भोला द यूट्यूबर क्या नाम है यार भोला द यूट्यूबर क्या हेफ्ट है इस नाम में. संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाते कौन से फॉर्मेट पे दोस्त. ना तो उन्हें T20 में मौके मिलते हैं ना तो उन्हें वनडे में मौके मिलते हैं. टेस्ट मैच तो दूर की बात है because there's so many players ahead of him. But I agree with you. I don't know क्यों वो नहीं खिलाते उन्हें खासकर वाइट बॉल फॉर्मेट में. टेस्ट में शायद उन्हें थोड़ा और समय बिताना पड़ेगा बाहर पर एटलीस्ट वनडे और T20 फॉर्मेट्स में भोला द यूट्यूबर मैं आपकी बात से सहमत हूँ. क्यों संजू सैमसन को मौके नहीं मिलते हैं. CJ Kohli has been struggling against spin for the last 3 years. His tendency to go on the front foot defense every time against spinners has got him out so many times. बिल्कुल I don't know why हमारे बैट्समैन दोस्तों लेफ्ट आर्म स्पिन को ठीक से नहीं खेल पाते लेग स्पिन को ठीक से नहीं खेल पाते लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग को ठीक से नहीं खेल पाते. भाई तो किस किस्म की बॉलिंग के आप
आप ठीक से खेल सकते हो. Off spin, right arm pace. There are too many problems in this team. It's a fantastic batting lineup with so much experience, so much potential in Iyer, Pant and Shubman Gill. बट बार बार दोस्तों वही तरह के बॉलर्स के सामने टीम फंस रही है. नीरज कह रहे हैं प्लीज सब लाइक कर दो. बिल्कुल बिल्कुल. नीरज आपका क्वेश्चन क्या था? आपका एक तो क्वेश्चन लिया था ना. हाँ, इंडिया के प्लेयर अच्छे से स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे फॉर एग्जाम्पल. बहुत बहुत आपने सही सवाल पूछा नीरज. और मेरा ये मानना है और बहुत ही एक सिंपल एक फंडा है. जब आपके डोमेस्टिक सिस्टम में अच्छे उभरते स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं, जब आप एक किस्म के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, एक किस्म के रिस्ट आर्म स्पिनर्स को खेल रहे हो नेट्स में, यानी कि आपने खुद के टीममेट से, तो आपका गेम कैसे बेहतर होगा? वो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट, जब आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं? किसी भी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस बाय एंड लार्ज उस देश के क्रिकेट सिस्टम से नापी जा सकती है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया वर फैंटास्टिक प्लेयर्स ऑफ स्पिन बिकॉज देयर वर ग्रेट स्पिनर्स कमिंग थ्रू. तो अगर आप उन स्पिनर के साथ आप खेलते हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो जाहिर सी बात है कि आपका गेम बेहतर होगा. बट अश्विन और जडेजा को छोड़कर वेयर आर द नेक्स्ट दोस टॉप क्लास स्पिनर्स कमिंग फ्रॉम? So it's because the Indian team does not play quality spinners. The next crop of players do not play enough quality spinners in the domestic circuit, even in the IPL. 4 overs of spin against some quality spinner does not make you a great spinner when it comes to batting 50 overs in a one day or batting session by session, day by day in a test match. तो मेरा ये मानना है कि आपका जो सवाल था नीरज झा कि ये अच्छे अच्छे स्पिनर्स कि अच्छे तरह से स्पिनर्स को क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने टॉप क्लास स्पिनर्स नहीं हैं. आप तभी इंप्रूव कर पाओगे जब आप अलग देशों में जाके अलग कंडीशंस में अलग तरह के स्पिनर्स से खेल पाओगे. व्हिच इज व्हाई आई फील कि जो हमारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट जाकर खेले हैं उनका गेम कहीं ना कहीं बेहतर हुआ होगा अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट पेस, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपोजिशन एंड दे आर प्लेइंग अ वेरीड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. राइट, काउंटी में हर हफ्ते आप कहीं अलग अलग ग्राउंड में खेल रहे हो, अलग कंडीशंस में खेल रहे हो, अलग टीम से खेल रहे हो. तो दैट इज हाउ योर प्लेयर्स आर गोइंग टू डेवलप. दिस इज व्हाई आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स आर नॉट एबल टू इम्प्रूव अगेंस्ट स्पिन. रही बात विराट कोहली की, उनका तो शुरू से ही प्रॉब्लम था स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन वो 5 साल के अंदर यानी कि 2014 के बीच में से और 2019 के एंड पे, इन दोज 5 years when Virat Kohli averaged about 94-95 in Test cricket, is because he had lifted his game to such an extent that he was able to do well predominantly against very very spinners. But then his bad time came in 2020. COVID आया, इनका फॉर्म डाउन हुआ था, तो उस बीच not playing enough quality spinners has definitely impacted Virat Kohli's game. चलिए, Ashutosh Bajpai, what was the point of having a past prime Unatkar when we were traveling with the A team bowlers like Krishna, Nagwaswala, Mukesh Kumar, Avesh? I think दोस्तों, it's a good question, Ashutosh, and somebody else asked me this question a couple days ago. I was talking with them during our match. To me, and I have no facts, I have no inside cover to prove this. I think Jaydev Unadkat's selection, first of all, was a bit of Rahul Dravid saying, here's our recognition, here's our hat off to someone who for 11-10 years has been very very successful, very very consistent on the domestic circuit. You don't have to agree with this. This is just my view. I think it was his way of saying, when you made your debut in 2010, हम भी उस time आपके साथ थे, आप 19 साल के थे. It was perhaps too much for you. And Rahul Dravid's selection as a coach and captain have always leaned towards people with experience. Ab Jaydev Unadkat has been a very, very successful, very, very hard-working player for Saurashtra. He's led them to titles. He's taken wickets. So it was, especially when Mohammad Shami was ruled out, when Navdeep Saini was ruled out, they probably said, let's go for someone who has experience, who pretty much can rock up and put the ball in that one spot, which is what we saw Jaydev Unadkat do. But yes, I get your point. जब आपने एक core pool identify किया था India A में, जो team कुछ हफ्तों तक बांग्लादेश में already थी, they were already well based there, why not pick someone from that India A pool? I understand your question, but I'm not saying that I agree or I disagree with the whole selection, but I get where it comes from. It was Rahul Dravid, I believe, his way of saying, here's, you waited for that cap for a long time, here's our way. Because in a sense, it still was a rather low-key series.
So that's my view. Right or wrong, I'm not going to get into that. But yes, Kuldeep dropped was worse decision. Bilkul, I mean, I tweeted about this. Dropping Kuldeep Yadav, who took 8 wickets, 5 wickets, and 3 wickets across 2 innings, and then scoring 40 in a very, very valuable partnership with Ashwin. What message does it sound? And Mr. Sunil Gavaskar said very, very mildly that he found it unacceptable, unbelievable. But आप अक्षय पटेल को ड्रॉप कर सकते थे, कुलदीप यादव, वी ऑल नो कि किस मुश्किल समय से, किस मुश्किल दौर से वो लड़का गुजरा. He finally got his confidence back in one day cricket, T20 cricket, and he put in a man of the match performance. उसके बाद I don't care what the conditions are, I don't care what the pitch is doing, I don't care what the overhead conditions are. You do not drop a player who took 8 wickets and scored 40 runs and was so vital to your win at Chattogram. You just do not do that. You can show visuals of Kuldeep smiling and laughing, wearing that yellow 12th man bib, but that was a very, very shocking decision. And I think KL Rahul's rather pathetic explanation at the toss. He said, very, very tough call, but then he was asked, was it because of the conditions? And he said, well, I leave this pitch reading and conditions reading to those who have far more experience and who have played far more. Maybe that's his way of saying, boss, I know कि social media पे अभी तूफान मच रहा है regarding Kuldeep's controversial drop. Maybe it is his way of saying, don't blame me, blame Dravid. I don't know. But very, very unfortunate and very, very sad decision to leave out Kuldeep Yadav. Pradeep Rajwar is saying, hello, sir. Merry Christmas. Hello, Pradeep, to you as well. Ahmed the Gooner saying, Krishna, Kuldeep Sen are injured and Unatkat has comfortably outbowled Mukesh, Avesh or Nagwaswala. Exactly. It just goes down to that experience factor. But like Achutosh was trying to point out, if he was so good, why was he not in your India A squad? Why was he not already there? So it's a selection that comes out of the loop. If he was actually on your radar, you should have picked him and perhaps said, hey, you might be in line, but then you just call him in, I'm using the term out of the blue because he was not in your initial plans. It's a bit surprising, but like I explained, it was basically, to my mind, Rahul Dravid's way of saying, Jaydev, well bowled for all these years. We know that probably you won't get a chance against Australia or in the future. Let's give you this chance in this rather low-key series. And I'm glad that he bowled well. He bowled very, very, very well. CJ is saying, will Kuldeep get a chance against Australia now that Jadeja will probably be in the squad? I don't think so. Unfair. He's always a fringe bowler. He gets his chances when one of the major bowlers is not around. He's only played nine odd test matches, I think, if I'm not mistaken, in about 5.5 years. That says he's never been your frontline spinner. Or खासकर overseas में India rarely play 3 spinners. I mean, so Kuldeep's chances have come when someone's been injured. So given the fact that a bowler of Ravindra Jadeja's stature, and I'm sure Jadeja will slot right back and have a huge impact against Australia. He's always been very, very good against Australia, either home or away. So I don't see Kuldeep playing unless the selectors and the think tank feel that Akshay Patel is probably not going to bring something. But again, that's very strange because Akshay's record in India is, even in a small sample size, is very, very good. So yes, unfortunately, CJ, I don't see Kuldeep Yadav playing too much unless someone gets injured or gets dropped. Ashutosh is saying KL is not leadership material. Look, he's not. Like I said earlier on this stream, KL Rahul was made vice captain and then test captain of India in the New Year's test match when Virat Kohli's back forced him out of a match on the day of the match. But KL Rahul has never captained Karnataka. He's not captained India A. His only captaincy experience that we can look as a sample size has come when leading Kings 11 Punjab, Punjab Kings or Lucknow in the IPL. But his teams have always ended up being last or second last in the IPL. So clearly he's not cut out. To my mind, I'm only speaking from my experience, KL Rahul is not seen as a captaincy material by any major team except for, forget the IPL franchises. The Indian team seems to think that he's a leader. When Virat Kohli and Ravi Shastri were combining to lead that team to great heights, unexpected heights, 5 years, top test team, 5 years in a row, were they grooming the next player as a captain? Clearly they were not. They had other things on their mind. They were not grooming a captain for the future, which is why all of a sudden KL Rahul, without any captaincy experience outside the IPL, which is a vast, vast kettle of fish when compared to test cricket, suddenly he's made vice captain and suddenly he's thrown into the cauldron when Virat Kohli pulls up injured. KL Rahul looked lost in that New Year's test match in South Africa.
And because of that, because of his poor form, India also ended up losing that test match. And again, a 1-0 lead was squandered. Uske baad, in this series, they named him vice captain. Then Rohit Sharma gets injured. He's made captain. There is nothing in his career to show that KL Rahul is a captain. If he's doing it in the nets, if he's doing it in team meetings, if he's doing it when the team is traveling, wo alag baat hai. We're not privy to such meetings and such scenarios. The team feels he's a leader. Good for you. I just don't think. I think a lot of comments have proved this on this channel. Wherever I go, I get asked this question: why is KL Rahul a captain? And I say, I don't know. So yes. Prasant John, that's a new name here. India picked the bowling for day one. They need to realize that this is a day 5 match and are playing in the subcontinent. Good point. A lot of the selections across formats that Rahul Dravid and Rohit Sharma have made have been open to criticism, have left a lot of people scratching their chin saying, "Yeah, ye kya hai?" I think this test match also underlined, Prashant John, what you were saying. So good point. I think the selection was a bit off. Kuldeep Yadav should have definitely played. Pradeep Singh, KL Rahul is the worst captain after Babar. I think he's an accidental captain. So, regardless of our bowling selection, says Amay the Gooner, we would have ended up chasing a 60-70 run target if not for some pathetic catching. Yes, the catching, as we mentioned, catching was rather poor, pathetic in your words, Amay. A lot of fans, a lot of viewers have mentioned throughout the year, in fact, to me here and on my other shows that I do, especially my Glance live chat, why are India dropping so many catches? It's a bit of a, for lack of a better word, bit of a pandemic. I think Indian cricket team has dropped more catches in the last 12 months than I've ever seen any Indian cricket team drop. So, pata nahi kya scene hai usme, but definitely has to be worked on. KL Rahul, Puran, Bishnoi, Huda. I'm not ready for LSG to become another KXIP. Yeah, a bit of a strange selection there when it comes to Puran. 16 crores for Puran. Wow, it's a lot of money spent there. A lot of money wasted, I think. हार्दिक शर्मा वापस आए हैं। जय भाई, क्या बांग्लादेश जैसे टीम के साथ टेस्ट खेल कर कोई फायदा है इंडियन टीम को? देखो, फायदा तो हर सिचुएशन, हर मैच से निकलता ही है। बस आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपको क्या फायदा लेना है। नो डाउट शुभमन गिल ने 100 बनाया तो फायदा हुआ उनको। कुलदीप ने 8 विकेट लिए, उनके मनोबल के लिए बहुत फायदा हुआ था। पर वही है, ये सीरीज पहले से तय हो जाते हैं, ये पहले से स्लॉट हो जाते हैं। आपको हर टीम के साथ हर देश में जाके आपको खेलना है। आई एम ओके। इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ये जाके बांग्लादेश में हारी हैं, सो आई थिंक इंडियन टीम रियली नीडेड टू बी टेस्टेड। अगर भारतीय टीम ने हल्के में लिया बांग्लादेश को, फिर ये उनकी तरफ से बहुत बहुत बड़ी गलती है। आई थिंक अगर ये भूल के भी हल्के ले चुके थे इनको, तो इस मैच के बाद से आई एम डूइंग अ लाइव, बाबू आ जाओ। उस मैच के देखिए, रोनाल्डो आए। इस मैच के बाद अभी कभी भी फ्यूचर में ये हल्के नहीं लेंगे। बांग्लादेश ने दिखाया इस टीम को कि आपके अंदर, अगर आपको याद नहीं है, आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम्स हैं स्पिन के अगेंस्ट। सो फायदा होता है दोस्त, बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस एक्सपीरियंस से आप क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे जाके आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। नीरज झा, सर रणजी से कोई ओपनर नंबर 3 का बैट्समैन सजेस्ट कीजिए। वो है ना रजत पाटीदार, वेरी गुड ऑप्शन फॉर द फ्यूचर नंबर 3। आई थिंक ही इज समवन हु इज डूइंग अ लॉट। यशस्वी जायसवाल दोस्तों, वो ओपनर हैं, वो जरूर कुछ सालों में इंडिया के लिए खेलेंगे। सरफराज, वो थोड़े मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, पर आई थिंक पीपल लाइक यशस्वी जायसवाल, वो फ्यूचर है। यश धुल 19-20 साल के हैं, यश धुल टॉप 3 में खेलते हैं, वो आगे जाके टीम में आ सकते हैं। बट आई थिंक राइट नाउ रजत पाटीदार का टाइम आने वाला है, probably in the next few years, if he keeps scoring runs. Series win shouldn't hide away the fact this was a huge wake-up call. Absolutely, because your name is Shaumideep. Absolutely, Shaumideep, this was a big wake-up call, and India now have to play much better cricket against Australia in those 4 test matches that will be starting in about 6-7 weeks. Hardik, Caden is here. That was Caden in his brand new Christmas Ronaldo jersey. Pranav Anand, welcome Pranav. Approach of the batter should be blamed. Batting like they've got to get through the day somehow, and no one tried to unsettle the bowlers. It's a surface where you can't block your way into a decent score. Very well put. Very articulate, Pranav. Yes, the batting. I mean, again, regarding the batting approach, like I said, probably you were not on the stream when I was talking about this. To send Akshar Patel after another poor start ahead of Rishabh Pant, ahead of Virat Kohli,
ahead of Shreyas Iyer, you know, shocking decision. Are you saying that Akshay Patel is there to negate the threat of a left arm spinner? Come on, you knew left arm spin, Taijul Shakib. This was going to be a major challenge. You should have prepared better. Was Virat Kohli scared? Was Dravid scared? I don't know. I hope not. But in regards to the approach, more than the manner of dismissals, more than the blocking and edging, it's the fact that your thinking was so shrouded by early losses, you know. Also, I must say, like I said earlier, I was shocked that Shubman Gill or Chiteshwar Pujara stumped in that situation. No, there's there's no room in fact to hide when you're stumped like that, both of them. So a lot of problems. If you're surprised by India's batting against spin, I think you've not been watching enough cricket. मैं तो कह रहा हूँ ये बैटिंग खासकर लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस टीम के अंदर. CJ, looking at the fourth innings scorecard of India, barring Iyer, no special batsman has scored in double digits, while even bowling order like Akshar Ashwin scored. What's with that? Same thing, application. I think Virat Kohli was already very scared when he came out to bat. KL Rahul has not scored a run for I don't know how long. Shubman Gill had really, you know, he'd faced 35, 40 balls. His dismissal was the worst for me because he was a set batsman. He got 100 in the last match. He is a batsman who looked very good against it. For him to charge down, bat away from the body, his getting stumped for me was a big surprise. I did not expect that. Pujara on the go can be singled out, but the ball also dipped and turned. It was a very good stumping. I think Pujara probably thought to himself, "यार मैं set हूँ, मैं इतना अनुभवी player हूँ. I've played 97 Test matches. I should probably get onto that." That was surprising. But again, when Shreyas Iyer outscores all these big names, when Ashwin outscores all these big names, hats off to both of them. Both players spin very well. But clearly the batting once again succumbed to pressure. Can you imagine if Bangladesh had scored 30 more runs, 25 more runs? Could have been a very different result. And then India's WTC chances would have been almost out the window. Yes, Somadeep. Abhimanyu Ishwaran, another opener. He's done very well. Him, Priyank Panchal, these guys have scored a lot of runs. In fact, Abhimanyu Ishwaran was probably this close to getting a chance had KL Rahul's niggle overnight not improved. He would have opened with Shubman Gill. Scored a lot of runs in domestic cricket. In fact, I interviewed him on this channel during lockdown. On this channel, you can go check out the interview when he was selected as a backup opener for the England tour and in 2021. I had him on this show. Good guy, ticked all the boxes. He'll feel, यार इत्तू सा रह गया मेरा debut India के लिए. Who knows whether that chance will come again, because once Rohit comes back, it's going to be very tough on these fringe players. भरत कोटवानी कह रहे हैं मोमिनल ड्रॉप कैच. हाँ बिल्कुल, आप ऐसे 19-20 चीजें को आपको देखना चाहिए इन चीजों में. इंडिया ऑल्सो ड्रॉप सम 4 कैचेस टू, सो मैच could have gone either way. इंडिया अगर वो कैच पकड़ते तो भाई वो हालत नहीं होती आज, बट सही बात है. I can never be convinced that Pujara knows how to whack the ball at will. But he's not a hitter. When he tries to hit, you see he just looks awkward doing it. His job is to bat out time. And I think he'll be very disappointed from the way he was stumped. Siraj, wicket of Liton Das also say, बिल्कुल सही. छोटे चीजों पर गौर करना पड़ता है दोस्तों जब when you look at these wins or losses though. Shubham Pachori, Border Gavaskar Trophy now looks really difficult. Well, it always looked difficult after India needed to win 6 test matches. 2 तो जीत गए, एक काफी आसानी से, काफी आराम से, और ये वाला तो मतलब बाल बच के दोस्तों इस मैच में. So now against that top Australian team आपको 4 मैच जीतना चाहिए. चलिए 3-1 भी चलेगा, बट बहुत मुश्किल है. ये ऑस्ट्रेलियन की टीम बहुत तगड़ी है. Currently, batsmen like VK have a golden chance to play Ranji and get in a groove, as there's nothing to gain from him playing T20s against SL or NZ. Same applies for KL Rahul. I'm not going to disagree with a single word you said, but we all know how the Indian cricket ecosystem works. These guys will skip a series, but they'll take a family, they'll put Instagram photos, they'll do ads. ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो हरगिज नहीं खेलेंगे भैया. इतनी अकल नहीं इनके पास जो आप और मुझ में है दोस्तों. नहीं, ये ब्रेक लेंगे. ब्रेक के समय भी इंस्टाग्राम पे लगाएंगे फोटोज यार्ड से, मसूरी से, कश्मीर से, कहीं अंडमान सेशेल से. ये तो चलेगा कुछ, और हम देखते बोलेंगे यार इसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, पर ये नहीं खेलेंगे भाई. आइसबर्ग चौहान, क्या गदर नाम है यार. जय भाई, सॉरी जॉइन लेट, प्लीज टॉक अबाउट द लॉन्ग टाइम वी टेक क्लियरिंग द टेल ऑफ ऑपोजिशन. कब से? जब से मैं ये गेम देख रहा हूँ अर्ली 90s से.
ये प्रॉब्लम तो है. इंडिया ऑलवेज स्ट्रगल टू बोल आउट. जेम्स एंडरसन गॉट 89 इन वन मैच. तो ये प्रॉब्लम है. पता नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंटिफिक वे टू से कि ये क्यों होता है, क्योंकि बॉलिंग वही है, अप्रोच वही है. I don't think they'll take the eye off the target or they'll become, lazy. Just, it's a problem. Some things are unexplainable. वही है, होता है बहुत बहुत सालों से दोस्तों. 27-28 साल से मैं इस दुविधा में रह चुका हूँ कि यार हमारी टीम अक्सर टेल एंड को आउट क्यों नहीं कर सकती. I don't know. Strange. Chandan Soni, for how long we have to carry KL? I don't know. I've struggled with this question also over the last 2 years too. हार्दिक शर्मा, क्या जय भाई आपके घर में भी रिलीजियस क्लैश हो रहा है क्या? मेरे यहाँ तो डिस्कशन चल रहा है कि 6 बजे तुलसी पूजन है और क्रिसमस पार्टी है. नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है. ना तो मैं रिलीजियस हूँ, ना मेहा है. हमारे घर में सब चलता है, जिसको आना है. हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, पर वो क्योंकि वो खुशी का त्योहार है. यू कैन बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, यू कैन बाय गिफ्ट्स फॉर केडन हु जस्ट मेड अ गेस्ट अपीयरेंस. ऐसा कुछ नहीं. हाँ, हम कुछ फाइट नहीं करते हैं. जिसको करना है करो. ना तो वो किसी खास धर्म को मानती है, ना मैं. हम सबको मानते हैं. जिसको आना है करो यार. आई डो नॉट लीन वन वे. खुश रहो सब, अपना मनाओ. हम कोई टाइम से कुछ नहीं करते हैं, कोई आरती पूजा नहीं करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, कोई प्रेयर नहीं करते. हम बस बड़े चिल्ड आउट किस्म से लाइफ को लेते हैं. Shreyas should have been MOS. He scored in the innings. He should have. He's had a fantastic series, and I think sooner or later he should be made the test captain. His game has developed so good. हाँ, short ball problems है यार, लेकिन जब तक आप यहाँ खेल रहे हो एशिया में क्या short ball problems यार. देखना ये श्रेयस अय्यर, दोबारा कहूंगा इस स्ट्रीम पर, श्रेयस अय्यर वनडे में बहुत रन बनाएंगे. अभी नेट टेक्नो इज बैक. हेलो जय भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाउ आर यू? मेरी क्रिसमस. ऑस्ट्रेलियन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी चीज बचाई. बिल्कुल, he's too good. और केएल राहुल जैसा डरपोक बल्लेबाज, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी नेट टेक्नो कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं. ये डरपोक बल्लेबाज, सॉरी पर कहना पड़ रहा है. बिल्कुल यार, दिल में दर्द होता है यार, क्यों नहीं. He's struggling. He needs help. He needs a clinical assessment of why he's not scoring runs. Fantastic player यार, ये all 3 formats का इतना अच्छा खिलाड़ी रह चुका है और होगा भी आगे जाके. But something is just, I don't know. Every time we talk about KL Rahul, it's so frustrating. The guy can score runs across formats, but something is not adding up. I don't know. I just feel bad for him now. Shubham Pachori, leg spinner is best to clear tail. Kuldeep Yadav, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, वो क्यों नहीं थे इसमें? द फर्स्ट थिंग आई सेड व्हेन आफ्टर आई ट्वीटेड माय फर्स्ट थिंग सेइंग यार ड्रॉप गड़बड़ है, आई सेड इंडिया इज गोइंग टू मिस हैविंग कुलदीप यादव बिकॉज द लेफ्ट आर्म चाइनामैन इज सो गुड एट टेकिंग आउट द टेल. और देखो वही हुआ. चंदन सोनी, मेहदी हसन बोल ब्रिलियंट यार. ऑफ कोर्स ही डिड. द गाय took I think 20 odd wickets in his first test series 2016 against England. He took 12 wickets in his second match. So of course he bowled well. And he got support from other end. Bangladesh could have won. Yeah, I think Taijul was a bit off in this innings. Again, there was a drop catch of Mominul Haq. Things could have been very, very different. But again, 19-20 का फासला होता है जब आप इन मैचेस को एनालाइज करते हैं. India should have been chasing about 80 runs less if they hadn't dropped catches. And had Mominul took that catch, it would have been very, very different. India could have lost this match. So it's a margin game. भरत खोटवानी कह रहे कैप्टनसी डज नॉट डू गुड फॉर राहुल. जब से कैप्टन बनाया परफॉर्मेंस है. क्योंकि भाई भरत, आप लेट आए हो स्ट्रीम पर. मैंने स्ट्रीम की शुरुआत में कहा था कि केएल राहुल कहीं से कप्तान है ही नहीं. वो कर्नाटका के कप्तान कभी नहीं रह चुके हैं. इंडिया एक कप्तान नहीं रह चुके हैं. वो केवल पंजाब फ्रेंचाइज और एक सीजन के लिए लखनऊ फ्रेंचाइज के लिए कप्तान रह चुके हैं. वो नहीं है लीडर. उस बेचारे को, जिनका फॉर्म इतना खराब है, जिनका कॉन्फिडेंस इतना लो है, आपने उस प्लेयर से कहा कि भाई कप्तानी करो, वो भी इंडियन टीम का. क्या सिलेक्शन है ये राहुल द्रविड़, सोचिए आप. Very, I just feel bad for him as well now. Ashutosh Bajpai, Rishabh Pant packs too much weight, not good for longevity. हाँ, he's a bit overweight, I get that. पर यो-यो टेस्ट नाम की चीज तो है ही नहीं अभी, तो सब खेल सकते हैं क्रिकेट. रोहित tried to see द्रविड़. द्रविड़ बेचारे, द्रविड़ कितना एम्फसाइज करेंगे यार. आई थिंक राहुल द्रविड़ he's realizing यार इंडियन टीम को कोच करना कोई आसान काम नहीं है. Too many mixed signals coming out of the Rohit Dravid captaincy coach जोड़ी. Selection are so clueless, says Shubham.
Absolutely. I mean, we've talked about this. I mean, it doesn't make sense. I think you summed it up by saying it doesn't make sense. हार्दिक भाई कह रहे हैं जय भाई क्या बीसीसीआई को अलग अलग टीम कर देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आपके कमेंट पूरा भी नहीं, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कह चुका हूँ 3 फॉर्मेट 3 कप्तान का टाइम आ गया भाई। रोहित शर्मा 35 years old, इंजरी प्रोन, अपने उस लेवल के बंदे को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी दी गई थी। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, बिल्कुल ब्रेक इट अप। पिक यंगस्टर्स। T20 में केवल युवाओं को खिलाइए, उन्हें बैक करिए, लेट देम फेल। ये बताइए T20 को लेकर 9 साल से आप कहीं आप 15 साल से आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, राइट? तो दिग्गज प्लेयर क्या कर रहे हैं, अनुभवी प्लेयर क्या कर रहे हैं? T20 फॉर्मेट में केवल 20 और 28 साल के प्लेयर्स को खिलाओ। जब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी वो रहता फिलहा रहे T20 फॉर्मेट में, गेट rid of all the seniors from T20, pick only 20 people in the 20-year-old bracket, in the 20 range, pick them for T20s. Let these middle of the range, let the experienced players play in test and one day and see what happens. And by all means, make Hardik Pandya the T20 captain. After next year's One Day World Cup, make Shreyas Iyer the one day captain, and for test cricket find somebody else. Maybe you saddle Shreyas with the responsibility of one day and test because he's still got years on his side, but please do not pick anyone above the age of 30 in the T20 team because they are not able to win you World Cups anyways. Let the youngsters fail, let them succeed, let them go through that process. T20 is only a young man's game, and by all means Hardik Bhai have 3 captains for 3 formats. That was my rant for the show. Bhanu Pratap, Pant for test captaincy? Not yet, not yet, not yet, not yet. But yes, maybe in 2 years. Yes, yes, yes. I think Iyer should be tried before him. Hamed the Gooner, Jamie, do you expect any tough calls from our selectors if the big man falls in the BGT, fails in the BGT? Yep, you have to. Who will take it though? Who will take it? Sandeep Patil, you need players of that stature who are not afraid to have a talk with Sachin. Since Kohli became captain, the selectors have been the worst I've ever seen. They've been the most paper thin selectors. So I hope someone has a talk, but I don't know. I don't see it happening. Rahul Dravid, says CJ, was always more of a team player than leader, and that's even showing in his coaching career. I agree. Very, very. I have nothing more to add than to say yes, you are spot on in your assessment. Do you think Ashwin is among the top 3 all-rounders in the world cricket at the moment? Absolutely, Chandan. Absolutely. He is. He's undoubtedly. He's there. He's there. Absolutely. Stokes to Hain. I think Cameron Green will evolve into one of those top 3 at some point. Ashwin for sure. Bilkul. Pat Cummins also is a very good all-rounder. Shivam Kansal. Should some players play only 2 formats just like Stokes? Absolutely. Virat Kohli has to play 2 formats. Rohit Sharma needs to play only 2 formats. Absolutely, absolutely. Even Hardik Pandya is not a test player. Hardik Pandya is never going to play a test match for India, and see what he does when he's just playing 2 formats. ऐसे बहुत players हैं. Once you cross the age of 32, दोस्तों, no matter how good you are, no matter आपका record क्या है, आपको केवल 2 format में ही focus करना पड़ेगा. Because अब दोस्तों तीनों फॉर्मेट्स की बात नहीं है. You have to put the T20 franchise / league ecosystem as a separate 4th category. Yes, it's a T20 format. It's the same as T20 international cricket, but it has to be recognized as a very high profile, very lucrative, very pressure situation you are under when you're playing a league. The T20 franchise system has to be put as a 4th category. So you have players like Kohli, you mentioned Ben Stokes, Rohit Sharma. They're already playing 3 formats, right? And then they're playing T20 leagues, IPL, BBL, CPL, PSL, or whatever league you want to put. The pressure on these players to stay fit all year round to earn money from leagues puts the T20 franchise in its 4th league. This is why Ben Stokes said, मैं one day नहीं खेल पाऊंगा. And again, Virat Kohli has to only play 2 formats. Big fan of him. He's had a terrific career. But to get the best out of him in 2 formats, he needs to drop 1 format. Same with Rohit. So, and who knows how it's going to be. Shubham Pachori, any guess why India played so defensive yesterday? I think they just succumbed to pressure. They knew that there were going to be 3 quality spinners bowling a lot of overs. Patience would not bowl. And that scorecard pressure, 140, just got to them. I don't know. Very, very strange session. Yes, I expected a bit of a fight from Bangladesh.
But to lose 7 wickets for what, 80, 90 on the board, that was shocking to me. Despite the problems, the clear problems that India have in their batting. Ashutosh कह रहे हैं, do you think coaches should be given more importance than captaincy like football? I don't know, man. Ashutosh, I've always looked at this coach scenario. What does he actually do? I think history is littered with examples of certain coaches, despite having great pedigree, not able to bring wonderful results with a certain team because egos come into play. A lot of coaches, when they go to overseas teams, there's a language barrier, there's a cultural barrier. I get what coaches can do and what they can bring to the table, but how much of a coach's role is actually carried forward once a game starts, once the 11 is on the field? You cannot go back and forth. Hansi Cornier tried that earpiece thing with Bob Woodward. That didn't last more than 2 days. तो कोच का क्या योगदान होता है जब 11 चुने गए हैं और फील्ड पे वो 11 परफॉर्म नहीं करते? नॉन हाउ डज अ कोच एक्चुअली इम्पैक्ट सिलेक्शन? Because you made your plans up to a level, you picked your 11. Match starts, the coach and captain don't have any relationship. The captain is taking his call. The captain is saying, "अबे तू bowling कर, तू ये कर." Coach का उस time कुछ योगदान नहीं है. A coach can help you put together a team. A coach can help you, who can help you make tactics. But unlike soccer/football, unlike American football, cricket is not such a technical game. You do not need to draw up a map to orchestrate a cricket match. That's more important in football. It's more important in the NFL. Cricket में कोच का इतना बड़ा योगदान नहीं है जितना कि decades से media, players, former players, then they've made out to be. I think a coach in cricket is very, very overrated. अभिनय टेक्नो जय भाई, दीदी के साथ लाइव क्यों नहीं करते? क्योंकि दीदी बहुत बिजी हैं आजकल. उनकी उनके उनका जो जहाँ पे वो काम करती है न्यूज़ 9 में, वहाँ एक नया प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत बिजी हैं और वो खुद ही ऑफिस में दिन में 2-3 लाइव्स करती हैं. तो व्हेन शी गेट्स बैक इन द इवनिंग बाय 7:38, ना तो उनके पास स्ट्रेंथ है, मूड है लाइव करने का, मेरा भी नहीं है. पर हाँ, जब मौका मिलेगा, जब दोनों की स्केड्यूल ट्यून होगी, तो हम ज़रूर आपके लिए एक लाइव लाएंगे यहाँ पे दोस्तों. चलिए, coming up to the 1 hour mark on this stream, it is of course Christmas Day. Once again from me to all of you, Merry Christmas and Happy New Year. मैं आपके साथ जुड़ूंगा अगले हफ्ते. मैं थोड़ा फ्री हूँ कुछ और कामों से, so I'll try and do a bit more lives. Thank you to all of you who joined the stream. Please hit the like button once again before going. It's been fun talking to you. I love taking your questions. I love hearing your comments. I like the odd rant that also comes through. So मेरी तरफ से आप सभी को शुक्रिया. Merry Christmas. I'll see you all. Before the New Year's up, I'll do a couple more streams. Indian cricket team nahi khelegi, but I have a few year-end videos, some top innings, some top spells. I want to do a video detailing India's 2022, which, let's face it, has not been very, very successful. So a few more videos lined up for you before the new year. Take care. Love you all. Enjoy your day. Once again, Merry Christmas and in advance, a Happy New Year to all of you. Goodbye.